Hello everyone. Today we'll learn about principal solution and general solution. What is the principal solution of a trigonometric equation and what is the general solution of an trigonometric equation? So today we'll talk about this one. So principal solution I will take the PS and general solution I will take as the GS. Okay. इस तरह से हम लोग मूव करेंगे. What is the meaning of principal solution? क्या होता है? कैसे डिफाइन करेंगे? How can we define what is principal solution? So the solution means basically solution means क्या होता है? If I talk about what is the meaning of solution, so here solution means the value of theta, okay, or possible value of an angle. That is the meaning of solution. Means in this entire chapter we have to talk about the value of an angle for which that equation will be defined. Okay, so what is the meaning of principal solution? The principal solution means that angle should lies angle or solution should lies between 0 to 360 degrees. Between 0 to what? जल्दी बताइए. 0 to 360 degree. So that solution in which theta lies 0 to 360 degree, that is called as the principal solution. So always remember this, principal solution lies between 0 to 360 degree. Are you clear with this part? Hello. ये पार्ट आपको समझ में आया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा हमेशा 0 to 360 डिग्री लाई करेगा. And what about for general solution? What for general solution? Defined for any value of theta. There are no such restriction we have in the general solution. Understood this part? The principal solution means the angle or your solution or your theta or x, a, b, c, d, whatever is the angle there. Okay, that should be lies between 0 to 360 degree. That type of solution is called as the principal solution. But when we talk about general solution, it is defined for any value of theta. You say so you can take the 1 crore degree, 2 crore degree, more than that. Doesn't matter that. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनरल सॉल्यूशन को. Okay, but when we talk about the principal solution, it should be lies between 0 to 360 degree. Okay, now second type of difference in the principal solution and the general solution. The principal solution is basically what? Basically, क्या बोल सकते हैं? Principal solution is basically what? Limited बोल सकते हैं और limited बोल सकते हैं. What about the general solution? Will be useful ज़्यादा अच्छा रहेगा. Just a second. मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन को ऐसे लिखा करो. इस वगैरह की जरूरत नहीं. प्रिंसिपल सॉल्यूशन नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा. Just a second. Number of the principal solution जो होगा that will be the finite. But what about the number of general solution? Number of general solution बताइए. एक finite है तो दूसरा क्या होगा? Infinite.
Understood this part? Yes. So number of principal solutions will be the finite, and the number of general solution will be the finite, infinite. Got this, Arohi? Yes, sir. Okay. Now, if I have to talk about the important feature of principal solution, important जो हमेशा आपके ब्रेन में रहना चाहिए, ये सारे थ्योरी से भी important क्या है, एक ही concept, that is one important concept. What we have to recall, or what we have to remember for the principal solution? Tell me any specific properties that we have to remember every time. Yes. Yes. Anybody? Arya, Yes, sir. can you tell me any specific properties of the principal solution? Any specific property? Theta should always be greater than 0 and lesser than 360. 0 to 360. less than 0 to 360. This is the about the principal solution. What about the general solution? What about the general solution? Any property? Listen, this thing you have to remember in your brain. Okay, always. Okay, if you are getting the any principal solution less than 0 degree and greater than 360 degree, that is not your principal solution. You have to keep in your mind the principal solution always lies between 0 to 360 degree. What about general solution? Minus infinity to infinity. Minus infinity to infinity, we can write down. But about general solution, we have to remember this thing. It is an equation. It is an equation. Understood? So about the general solution, you have to remember whenever you are writing the equation. Okay. Whenever you are writing the general solution, you have to write there an equation. एक equation आपको लिखना पड़ेगा. But when you have to find out the principal solution, in that you just get the two finite values, which almost will lies from 0 to 360 degree. तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है हमेशा. Understood this two part? Yes. Yes, sir. Okay. Now we will discuss some question related with this thing. You find principal solution of 2 sin x equal to root 3. 2 sin x equal to what? Root 3. It is a what? It is a trigonometric equation. It is our, yes or no? It is a trigonometric equation. If Yes, there is sir. the equality sign, and it is equation, and it is related with the trigonometric, that's why it is trigonometric equation. Now we have to calculate here, find the principal solution of 2 sin x equal to root 3. It means that what we have to calculate? Solution means what? We have to calculate x, whatever the angle is here. What is the principal means what? What is the meaning of principal? Should That be must 0 to between 360. 360. So calculate the angle for this equation, 2 sin x equal to root 3. So tell me the possible value of x, so that will get 2 sin x equal to root 3. So you have to Degree. calculate and tell me the answer for this, okay? Before solving this, okay, try to understand this concept. Rastogi. Sir. What is the angle of this quadrant? 60 degree. Or the angle of this quadrant? What is the angle of this quadrant? 90, na? Theta. What is the angle of this quadrant? Yes. Angle of this quadrant? Gauri Nayak. What is the angle of second quadrant? Pi minus theta. That is a pi minus theta. What is the angle of this quadrant? Pi plus theta. Pi plus theta. Arohi, what is the angle of this quadrant? 2 pi minus theta. 2 pi minus theta.
This thing you have to remember always in your brain. मतलब fix कर लो भाई, कहीं पे चिपका दो brain में लिख के. The angle of the first quadrant is theta, angle of the second quadrant is pi minus theta, angle of the third quadrant is pi plus theta, and angle of the fourth quadrant is 2 pi minus theta. Where theta is, बोलो, where theta is Less than less than 90. angle of 10th standard syllabus. Understood? Angle of 10th standard syllabus. Understood? Hello, am I audible? No? Pi is what? 180. Sorry, pi is 180. But what about theta? I cannot put theta equal to 120 here because theta जो हमारा सा रहने वाला है, it lies. Theta must be lies because according to our क्या बोलते हैं assumption, theta must lies between बोलो 0 degree to 90 degree. अब आपको इतना ही दिमाग में रखना है थीटा के लिए. So कोई आपको बोल रहा है कि थीटा, particularly theta, I'm not talking about the pi minus theta क्या होगा, doesn't matter that, I'm talking about theta. थीटा का वैल्यू 91 डिग्री है, बोला शांत रहो. थीटा must be acute angle. Clear with this part? Hello. yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, tell me the trigonometric ratio which are positive in the first quadrant. सर सारे ही है. All are positive. Please involve everyone, okay, here and speak so that we will get like some idea about this topic. So all. What about here? Sin theta. Sine. Sine and Don't write cosec theta because we don't want that. We are not compatible with that. So forget it. Okay, sin theta. What about here? Tan theta. We know Tan that log theta will be also, but I'm talking about tan. If you have your expression in terms of cosec, please convert into sine. First understand the basic, then move for the uske reciprocal kya honge and all. Okay, what about here? Cos theta. And sec theta, but we will not talk about for that. So sec theta. Listen. So can we say that every trigonometric ratio is positive in two quadrant and negative in two quadrant? Can I make one statement here? Every TR means trigonometric ratio will be positive, or every trigonometric ratio is positive in two quadrants and negative in other two quadrants. Can I make this statement? Is it right or wrong? What do you think that? Is it Right. right? Yes. Because if you talk about sin theta, 10 मिनट sin theta कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है? Yes, 10 मिनट. Smith, are you there? Hello? Amaya, are you there? Yes, sir. So tell me, sin theta will be positive in which quadrant? For sin theta, positive is the positive. Sin theta कहाँ positive होता है? First and second quadrant. Okay, तो sin theta positive होता है, positive first and second. And what about negative? In third and fourth. Negative, third and fourth. Okay, what about for the cos theta? Cos theta tell me positive कहाँ होता है? For the cos theta? First and fourth quadrant. First and fourth. So first and fourth. Okay, and what about negative? Second and third. Second and third. What about for tan? Positive? First and third. First and third. And negative?
second and fourth. Second and fourth. Understood this part? Can we say that every trigonometric ratio is positive in two quadrant, every trigonometry is negative in two quadrant? समझा ये चीज? Hello. Yes, And sir. because of that, if I ask you sin x equal to, we have there 2 sin x equal to root 3. What is the value of sin x? What is the value of sin x? 60. √3/2. Sin x is root 3 by 2. Bachas. X is 60. Sin x is not 60. Sin x is root 3 by 2. Understood this part? So what you have? हाँ. What is this? This is called as what? ये क्या है? ये क्या है? जल्दी बताओ. What is this? That is a trigonometry ratio, नहीं यार. That is what trigonometry ratio. And here trigonometry ratio is positive or negative. Yes. Positive. That trigonometry ratio is positive. That trigonometry ratio is what? Positive. It means that if this trigonometry ratio is positive, it must have how many solution? कितने solution है? क्योंकि ये positive है. Because this trigonometry का जो number आ रहा है ये positive है. If it is a positive, it means how many solution? जल्दी बताओ. 2 solutions. The first quadrant and the second quadrant, 2 solution. That's why if you look at the principal solution in one rotation, you will get 2 times sin x equal to what? √3/2. एक तो आपको इस एंगल के लिए मिलेगा पहले क्वाड्रेंट में और sin x equal to √3/2 यहाँ पे भी मिलेगा in the second quadrant. So you will get 2 times of sin x equal to how much? बोलो √3/2. For 2 angle, one angle will be this and another angle will be this. For 2 angle in one rotation, you will get 2 times sin x equal to what? √3/2. Means आपको कितने एंगल मिलेंगे यहाँ से? 2 एंगल. And for one rotation, we will get two angle. And because of that 2 angle, जो principal solution होते हैं कितने होते हैं? In one rotation, 2 solution होते हैं. सर 2 होते हैं. अभी समझा है कि 2 solution क्यों आ रहा है आपको? हाँ. Understood? Everyone? सर अगर वो वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी 2 ही होंगे. अरे अच्छा क्या करते हो? चलो एक क्वेश्चन नेगेटिव पे कर लेते हैं. ओके नेगेटिव. सपोज यहाँ पे माइनस रहता, माइनस √3/2 होता था. ये नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब कहाँ पे जाएगा? इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो फॉर एनी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यू विल गेट द 2 सॉल्यूशन. कितने सॉल्यूशन हमें निकालने हैं? 2 सॉल्यूशन. ओके 2 सॉल्यूशन निकाल. नाउ टेल मी व्हिच मेथड यू वांट फॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. बड़ा वाला मेथड चाहिए या छोटा वाला मेथड चाहिए? मतलब क्विकली निकाल दे या मतलब पूरा प्रोसेस के साथ करना है? मैं मार्क दोनों में देने वाला हूं आपको. डोंट वरी. बताइए जल्दी से. व्हिच वन? शॉर्टकट और लॉन्ग कट? यू विल गेट 100%. इन द लॉन्ग कट यू विल गेट कंफ्यूज्ड. यदि प्रोसेस से जाओगे ना कभी कभी ऐसा होता है कि एंगल आपको नेगेटिव आता है और फिर अरे नेगेटिव एंगल कैसे होगा? फिर 360 से माइनस करना पड़ता है तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है. लेकिन यदि मैं आपको शॉर्टकट समझा दूं तो उससे आपको कभी आंसर आपका गलत नहीं होगा. तो आप लोगों को बताइए कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, लॉन्ग वन और शॉर्ट वन? हेलो आवाज आ रहा है ना? इतने सारे स्टूडेंट है, कोई तो बताओ. Short one. शॉर्ट वन ठीक है. Short. सो sin x इक्वल टू व्हाट? √3/2. अंडरस्टूड? इतना तो आप लोगों ने ये यहाँ तक हमें हमेशा sin x इक्वल टू फाइंड करना है. ओके नाउ लिसन वेरी केयरफुली. दिस √3/2 में कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं? कौन कौन से क्वाड्रेंट जल्दी बताओ. सर पहले 2. फर्स्ट एंगल कितना है? थीटा. सेकंड का एंगल कितना है? पाई माइनस theta. व्हाट इज थीटा? थीटा. थीटा कितना डिग्री है? sin x इक्वल टू √3/2. तो थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ? 60. यहाँ पे जो आपको एक x मिलेगा, थीटा इक्वल टू व्हाट? 60. मतलब ये हो जाएगा आपका 60 और दूसरा जो x होगा वो कितना होगा बोलो? 180 माइनस 60 कितना हो गया? 120. So these are the 2x. These are the what? 2x. So one x is 60 degree means one x is 60 degree and another x is 120 degree. Understood this part? I'll take another question. Don't worry. But आप लोग थोड़ा सा इसे रिकॉल रियलाइज करने की कोशिश करो. एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या होगा? Means first x I will write on x equal to what? 60 degree. Second x I will write on x equal to pi minus theta. That will be equal to what? X equal to 180 minus 60 degree. Understood this part? But what is theta?
थीटा इज, बोलो, एंगल फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पीआर रेशियो, मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। समझ में आया? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, तब आप लोगों को पार्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक है, जस्ट सेकंड। टू कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये दिया हुआ है इक्वेशन, और कह रहा है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बताइए कैसे करें? if 2 cos x plus 1 equal to 0, so can we say that what we have given here, क्या इक्वेशन है? 2 cos x plus 1 equal to 0, it means that 2 cos x equal to minus 1, that means cos x equal to minus half. Can I write this is the cos x equal to what? Minus of half. Any problem? Vani, are you in the class? No. Okay, no issue. श्रेया बताइए, sin x कहां नेगेटिव होता है? सॉरी, cos x कहां नेगेटिव होता है? दिस इज नेगेटिव, सो टेल मी द क्वाड्रेंट्स। दूसरा चौथा। cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वेट रस्ते, तुम नहीं अकेले नहीं पूछे, जब पूछेंगे तभी आंसर करो उसको। वेट, अंसारी, कैफ अंसारी, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ सर। बताइए cos x कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा? पहला तो छोड़िए दीजिए, क्योंकि पहला में हर पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कहां होगा? नेगेटिव कहां cos नेगेटिव होगा? याद करो, ये इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें साइन थीटा, इसमें tan थीटा, इसमें बोलो cos थीटा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, इसका एंगल कितना था? रिमेंबर इट, थीटा। व्हाट इज एंगल ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा। इसका एंगल पाई प्लस थीटा। व्हाट इज द एंगल फॉर दिस? 2 पाई माइनस थीटा। इतना चीज आपको हमेशा याद रखना। अब मैं क्या पूछ रहा हाँ हूँ सर। अंसारी कि cos x हाँ नेगेटिव कहाँ होगा? तो पॉजिटिव कहाँ होता है? यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव होता है cos। इन द फर्स्ट ऑल पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्या होगा? दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव ना। तो टेल मी द अदर क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। हाँ। ये फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, और थर्ड ना? थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में? इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ। ओके, एंड व्हाट अबाउट द दूसरा वाला बताइए? एक तो सेकंड है, दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा होगा जिसमें नेगेटिव होगा? फोर्थ होगा ना? फोर्थ और थर्ड। फोर्थ में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में पॉजिटिव है, तो इन दोनों में नेगेटिव होगा। सो हियर इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड बोलिए इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हाट इज द एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट? एंगल क्या है सेकंड क्वाड्रेंट का? पाई माइनस थीटा। एक सॉल्यूशन पाई माइनस थीटा। व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन? पाई प्लस थीटा। तो ये एक x आपको मिलेगा पाई माइनस थीटा, अनदर x विल बी द पाई प्लस थीटा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? सर वो थर्ड क्वाड्रेंट है। ओह थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी। एंगल से लिखे है ना, भावनाओं तक पहुंचने से, सॉरी। ओके, सेकंड एंड थर्ड। Dasmit, am I audible to you? Yes, sir. Tell me which value, what we have to put in the place of theta here? थीटा क्या है बताइए? थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे? थीटा तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए देखा जाता है 60 ना? degree. हाँ, सही पकड़े हो। थीटा किसके लिए देखा था? पॉजिटिव के लिए। तो फॉरगेट अबाउट माइनस। ओके, cos x इक्वल टू हाफ, cos x इक्वल टू हाफ। तो पॉजिटिव हाफ आपका cos के टेबल में हाफ कहां पे मिलता है? 60 डिग्री। दैट्स व्हाई 60 degree. we will write down here 60. 60 means what? Pi by 3. Remember this also. Pi by 2 means 90. Okay, pi by 3 means 60. Okay, pi by 6 means 30 and pi by 4 means 4 है तो कितना? 45. ये चीज पता होना चाहिए। So instead of 60 I will write down pi by 3. You know, if you solve this you will get x equal to how much? 3 pi minus pi, that is it? 3 pi 2 pi minus by 3. 2 pi by 3. Understood? Now what about the other x?
दूसरा क्या होगा, ये मान के चलो x1 पहला वाला सॉल्यूशन है, ये पहला वाला सॉल्यूशन। व्हाट अबाउट द अदर वन, x2 कितना होगा, तो पाई प्लस थीटा विल बी एज इट इज, थीटा सेम ही रहेगा पाई बाय 3, सो द आंसर फॉर अदर विल बी द 4 पाई बाय 3। एवरीवन गॉट दिस, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा सर है? इसको रेडियन वाले उसमें ना कि ट्राई टू राइट डाउन इन द रेडियन फॉर्म। ठीक है सर। अंडरस्टूड एवरीवन, कोई इशू नहीं है ना इसमें, एवरीथिंग इज क्लियर हियर? यस, यस सर। okay. Now try to solve this question. If tan x plus 1 equal to 0, find principal solution. Second question, if cosec x equal to root 2, find principal solution. 1 to that side, and we will tan is equals to -1. Okay, Tan x So is you- equals to -1. yeah, if you solve this you will get tan x equal to -1. Next step, Answer minus will be possible in the second and fourth quadrant. okay, in the second and the fourth quadrant, right? So sir, it will be x1 is equals to the pi minus theta. Or we can say that 180 degree minus theta, if you are not Yes, comfortable with the radian. And what about x2 will be? And x2 is equals to 2 pi minus theta. X2 will be equal to 2 pi minus 360 theta. minus theta. That is 360 degree minus theta. No issue. What is theta? What is theta? 45. Theta is 45. Why? Because for one, okay, for one plus one, okay, for plus one, okay, in tan table, where you get theta equal to 45 degree. Okay, so can we say that x1 equal to what? 180 degree minus 45 degree. What about x2? 360 degree minus 45 degree. 40, So what is x2 here? Sorry, x1 here. X1 135 degree. 135 degree. What about x2? X2 350 7 pi by degree. 4. 300 and 15. 15 degree. So these two are the answer. Okay, try to solve question number second. Okay, and after that, okay, I'll give them another one. First, try to solve the question number second. Understood? सर हो गया। सर 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। हाँ वही है। Okay, wait for 2-3 minutes. सर रेडियन या डिग्री दोनों में ही चलता है क्या? Tell me the answer for the second one. Hello. 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 Am I audible? Yes. Yes, Okay. sir. So tell me what is the answer for the second one? सर 45 डिग्री एंड 135 45 degree and 135 Cosec. degree. So we don't know cosec. What is cosec? So what is sine? 1 by root 2 reciprocal. First quadrant and second quadrant. What is the in the first quadrant? Theta. What is in the second quadrant? 180 minus theta. What is theta? 45 degree. What about the here? 180 minus 45 degree. So x2 will be equal to 1. जल्दी बताओ 30
5 degree. 135 degree. Okay, now try to solve the next question. Ansari, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर. Okay. Now try to solve this question. Find principal solution of 2 sin x minus 1 into 2 cos x plus 1 equal to 0. So find the principal solution of 2 sin x minus 1 in the bracket 2 cos x plus 1 equal to 0. निकाल के बताइए कितना आ रहा है. So this is the solution of this question. Okay, दो factor हैं. We have to make two factor separately equal to 0. Okay, then we'll get sin x equal to half. Okay, after that sin x is positive here, so in the first quadrant and the second quadrant. So in the first quadrant answer will be 30. In the second quadrant answer will be 150. Then we have the cos x equal to what? Minus half. Negative in second quadrant and third quadrant. Second quadrant में ये आएगा, third quadrant में ये होगा. Understood? Yes, sir.